So the Tropic of Cancer lies from here, and this is the Tropic of Capricorn. Through between you have the equator. And if you see that the rainforest, it's a dense evergreen forest with an annual rainfall of at least 400 centimeter. It is so green. So you know it is tropical rainforest and temperate rainforest. Tropical between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. And in the temperate region, above the Tropic of Cancer, below the Tropic of Capricorn is the temperate region. You have conifer trees. If you go to the hill areas, you will find conifer trees. These are conifer trees. पहाड़ में भी मिलता है conifer trees. ऐसे these conifers they look like this. ऐसे जो पेड़ दिखते हैं ना, this is temperate region. ऊपर northern ये हम लोग के यहाँ पे नहीं रहता है, होता है पहाड़ में. But यहाँ ऊपर में when you go to Europe you find all these types of trees. Evergreen throughout the year they are green. हाँ, मतलब पत्ता नहीं झड़ता है. Okay, so that is in the temperate region you find them. So it is an ecosystem type that occurs roughly within 28 degrees north or south of the equator. So beach wala area. So Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn. It is in this region. Most famous is this Amazonian rainforest, African rainforest. You have a rainforest in Borneo, Sumatra. यहाँ पे इंडिया में बहुत कम, इधर उधर सब चला गया इंडिया में. You had tropical rainforests over here, लेकिन some of them are in the पहाड़ के उधर रहता है, but you don't have it anymore. These are the tropical rainforests. इंडिया में बहुत कम है, but it's very important. Two words, both it's very warm and it is wet. গরম থাকে আর সবসময় ভিজে থাকে. गरम है मतलब पसीना होगा और बहुत भीगा रहता है. And they are sometimes also known as jewels of the earth. World's largest pharmacy, lots of बहुत जड़ी बूटी मिलता है यहाँ पे. And it is the most threatened ecosystem. So types of rainforest में you have lowland equatorial evergreen rainforest, नाम है. Moist deciduous semi-evergreen seasonal forests, mountain rainforests, flooded forests. 7 types of flooded rainforest. सुंदरबन में मिलता है. Permanently waterlogged swamp forest, seasonally waterlogged swamp forest, lower floodplain forest, middle floodplain forest, upper floodplain forest, old floodplain forest, and previous floodplain. Just 7 names. So let us look at the structure of a forest. Forest कैसे दिखता है? So नीचे वाला एरिया को बोलते हैं, नीचे वाला एरिया, दिस नीचे जो एरियाটা দেখছিস না জ্যোতি? হ্যাঁ স্যার. This is known as the forest floor. उसके ऊपर वाला, the little bit above on that is known as understory. फिर उसके ऊपर में कैनोपी ऊपर वाला एरिया में, और एकदम ऊपर में जो निकल रहा है नया नया, that is known as emergent layer. This is the layer of a rainforest. If you look at the under में नीचे भी रहता है, जमीन के नीचे भी फॉरेस्ट का ये पार्ट रहता है, लिटर फॉरेस्ट फ्लोर. तुम देखोगे फॉरेस्ट फ्लोर ऐसे दिखता है. This is how a forest floor looks like. So ये फॉरेस्ट फ्लोर में what is there in the floor? हम लोग तो ऊपर में देखा है लेयर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट ऊपर में. वी हैव सीन फॉरेस्ट फ्लोर. नीचे फॉरेस्ट फ्लोर को देख रहे हैं. What is there in the forest floor? This is the forest floor. It is the lowest level of the rainforest.
सबसे नीचे है डेट्रिटस, डफ एंड ओ होराइजन। डेट्रिटस मतलब जो पेड़ पत्ता, ऑल दीज थिंग्स, लीव्स दैट फॉल ऑन द ग्राउंड, वो सड़ता है, रिच सॉइल बनाता है, दैट इज डेट्रिटस। This is one of the most distinguished features of a forest ecosystem. It is one of the most important features कि ये detritus से बनता है। डफ वही 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 सेम चीज रहता है। और उसके अंदर inside this detritus you will find small earthworms, different types of peripatus, onychophorans, lots of things, insects, बहुत सारे चीज यू विल फाइंड यू। और बहुत सारे पेड़ पौधे भी मिल जाएंगे, छोटे छोटे एल्गी, मॉस। इट इज वाइड वैरायटी ऑफ फॉना एंड फ्लोरा। दिस इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बहुत सारे यू विल सी लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ओवर देयर, स्मॉल स्मॉल ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। तुम लोग, लॉट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आल्सो विल बी प्रेजेंट। This is one type of animal which is found. Name, remember the name, okapi. Sumatran rhino, rhinoceros. तापीर, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में, यहाँ से पतला एक टांग निकलता है, उसे चींटी वीटी खाता है तापीर। अब नाउ वी कम टू द अंडर स्टोरी लेयर, थोड़ा सा ऊपर में, फ्लोर के ऊपर। दिस इज द अंडर स्टोरी लेयर। एकदम ऊपर नहीं है, जस्ट बीच में, जस्ट फ्लोर के ऊपर से। इट लाइज बिटवीन द कैनोपी एंड द फॉरेस्ट फ्लोर। इसमें बहुत सारे बर्ड, स्मॉल मैमल्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, ये सब चीज रहते हैं, प्रेडेटर जो खाते हैं हम लोग को। लेपर्ड, पेड़ में रहता है लेपर्ड। पॉइजन डार्ट फ्रॉग, देखते बात चीज ज्योति है सर। रिंग टेल्ड कोआटी, ऐसे दिखता है। बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर, दिस इज डेंजरस, पकड़ के खा लेता है एकदम, अजगर। अजगर देखे हो ये, पाइथन, पाइथन जैसा है बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर। और भी लेंगे, उसके ऊपर रहता है कैनोपी, ऊपर का एरिया, और भी ऊपर, इससे ऊपर भी रहता है, बट दिस इज द कैनोपी। फॉरेस्ट का कैनोपी नॉर्मली दिखता है। दिस इज द प्राइमरी लेयर ऑफ द फॉरेस्ट फॉर्मिंग अ रूफ ओवर द टू, एक छत बनता है बाकी दोनों लेयर का। डेंसेस्ट एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लार्ज मेजॉरिटी ऑफ लार्जेस्ट ट्रीज। कुछ ऑर्किड्स ग्रो करते हैं, सुंदर सुंदर ऑर्किड्स किस लेवल लेवल पे। And then you have this type of birds, yellow cast wattled hornbill. These birds are there. Collared sunbirds, Congo African grey parrot. इसके ऊपर आता है emergent layer. कैनोपी तो है, लेकिन एक दो देखो पेड़ निकल गए ऊपर में, थोड़ा सा एक दो ऊपर में आता है कैनोपी, दैट इज नोन एज emergent layers. Small number of very large trees called emergents. वहां पे रहते हैं, कौन रहते हैं? क्राउन्ड ईगल। दिस इज द क्राउन्ड ईगल। किंग कोलोबस रहता है, दे स्टे। फ्लाइंग फॉक्स, बेसिकली फॉक्स बोलता है, इट इज बिलोंग्स टू बैट्स, चमगादड़ बोलते हैं ना। एंड व्हाट इज द इकोलॉजी ऑफ इट? क्लाइमेट, सॉइल, कार्बन फ्लक्स, फॉरेस्ट सक्सेशन। फर्स्ट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होगा? सॉइल क्या होगा? कार्बन फ्लक्स होता है वो, हाउ कार्बन इज टेकन अवे फ्रॉम द सिस्टम एंड हाउ कार्बन इज एडेड टू द सिस्टम। फोटोसिंथेसिस में कार्बन इज एडेड, खाने के बाद कोई रिसोर्स लेके चला गया, कार्बन इज रिमूव, इनपुट आउटपुट ऑफ कार्बन। फॉरेस्ट सक्सेशन होता है, से फॉर एग्जांपल यू हैव in our college, if you go from the GT road side,
लेफ्ट साइड में यू विल फाइंड एक जंगल रहता था, लॉट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, एक जंगल टाइप का रहता था, निकाल दिया, ठीक है, कुछ निकल गया। देन व्हाट कम्स लेटर, फिर से पहला क्या आएगा, फर्स्ट यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ ग्रासेस कमिंग, then छोटा छोटा shrubs will come, then बड़ा trees will come. This is known as ecological succession. तो इस फॉरेस्ट में अगर कुछ एरिया क्लियर करोगे तो व्हाट कम्स, ऑटोमेटिक है, छोड़ दोगे तो अगर फायर लग गया चला गया, फिर व्हाट कम्स, और एक बैरन लैंड है उसमें पानी गया, फर्स्ट क्या रहेगा लैंड में, फर्स्ट देखोगे एल्गी लाइकेंस आएगा, फिर ग्रास आएगा, फिर छोटा श्रब्स आएगा, फिर बड़ा ट्रीज आएगा, बहुत बड़ा ट्रीज आ जाएगा, फिर उसमें पेड़ पौधे पंछी सब आ जाएंगे, इट बिकम फॉर दिस स्टेप्स, दीज आर नोन एज several stages of ecological succession. एक के बाद एक के बाद एक के बाद, this is known as succession. Climate is equatorial climate. Temperature, rainfall, dry season intensity. Equatorial climate में पूरा साल भर बारिश होता है. Soil is altisols, well weathered acidic red clay soils. और फिर होता है ऑक्सीसॉल्स, एसिडिक, ओल्ड, टिपिकली रेडिश, हाईली वेदर्ड एंड लीच्ड, ये टाइप ऑफ सॉइल होता है. टू टाइप्स ऑफ सॉइल, अल्टीसॉल्स एंड ऑक्सीसॉल्स. याद नहीं है तो सॉइल्स पढ़ने का जरूरत नहीं है. हाउ सॉइल्स, न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल्स आर रिसाइक्ल्ड. सॉइल्स, they create a widespread root network at the surface for more efficient uptake of nutrients in a very nutrient poor and competitive environment. बहुत रूट नेटवर्क रहता है नीचे में, एक रूट के बाद एक रूट, एक कनेक्शन रहता है. These are buttress roots. Now carbon flux. What is carbon flux? Defined as the exchange of carbon dioxide between the atmosphere and a sink. The forest is the sink. Atmosphere में carbon dioxide है. They are picking up that carbon dioxide and with the help of sunlight they are creating leaves and फल फूल जो बनाता है. This is all carbon and that is food for others. Monkeys खाते हैं फल फूल. Forest succession, it is an ecological process that changes the biotic community structure over time towards a more stable, diverse community structure after an initial disturbance to the community. चला गया, फिर एक के बाद पहला जो फर्स्ट स्पीशीज जो आया, दे आर नोन एज पायनियर स्पीशीज. फिर उसके बाद आया नेक्स्ट सेरल स्टेज, then another seral stage, final जो stable community which is formed in finally, that is known as the climax community. एकदम लास्ट में जो बनता है climax community, stable वही रहता है. So geography, South and Central America, Amazonian rainforest, Atlantic rainforest, Central American Atlantic moist forest. Africa में Atlantic equatorial coastal, names of this, Ituri rainforest, Kilum Ijim forest, Madagascar lowland forest. ये सब फॉरेस्ट का नाम याद रखना पड़ेगा. नाम अफ्रीका में क्या है, एशिया में क्या है. एशिया में सुलावेसी लोलैंड रेन फॉरेस्ट, बोर्नियो लोलैंड रेन फॉरेस्ट, पालावन रेन फॉरेस्ट, हरप्पन रेन फॉरेस्ट. ऑस्ट्रेलेशियन ओशेनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया और उस इंडोनेशिया वो सब एरिया. डेनट्री रेन फॉरेस्ट, हुआन पेनिनसुला, माउंटेन रेन फॉरेस्ट, हवाईन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये सब चीज याद रहना पड़ेगा. मेजर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पे है, ये रेड एरिया में, ऑल दिस रेड एरिया. कुछ ऑस्ट्रेलिया में भी है, ड्रॉ तो नहीं कर पाओगे फिगर. अमेज़न का रेन फॉरेस्ट को बोलते हैं दे आर द लंग्स ऑफ आवर प्लेनेट. इतना का ऑक्सीजन निकलता है उसमें से. So what are these are the plants, ये सब प्लांट्स मिलते हैं अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट में. देख रही है, लिखने का कुछ नहीं है, जस्ट देखने के लिए है. ये एनिमल्स बहुत सारे मिलते हैं रेन फॉरेस्ट में. दिस इज अ टापीर, लेपर्ड, अमेज़ोनियन पीपल, ये सब चीज में. कॉन्गो रिवर बेसिन अफ्रीका में, ये एरिया एकदम रेन फॉरेस्ट है.
यहाँ पे क्या क्या plants, these are the plants which are available, these are the animals which are present. यहाँ का people, सेंट्रल अमेरिका का रेन प्लांट्स, एनिमल्स, पीपल। एक जिम पार्सन का फोटो दे दिया, बिग बैंग थियरी। मेडागास्कर रेन फॉरेस्ट, अफ्रीका का जो आइलैंड है मेडागास्कर, वहां पे। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। दिस इज नेपच्यून्स कप बोलते हैं इसको, पानी जमता है इसके अंदर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉग्स, मंकीज, लिजर्ड्स, पीपल। साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे प्लांट्स है। ये भी एक तरह का, ये वेनस फ्लाई ट्रैप, एनिमल्स, स्नेक्स, पीपल, फिलीपीन रेन फॉरेस्ट। ये सब देखने के लिए है, ये पढ़ने के लिए, एनिमल्स या ये सब एनिमल्स मिलता है। तो इतना ही पढ़ना है इसमें, ठीक है ना। टूरिज्म टूरिज्म ये सब चीज पढ़ना नहीं है। ओके, ये हो गया रेन फॉरेस्ट, और एक डेजर्ट कंप्लीट कर देता हूँ आज। हाँ, व्हाट्सएप में दे दिया इसको, ये भेज दिया। लास्ट वाला पार्ट मत पढ़ना, सिर्फ सामने वाला पार्ट पढ़। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो सब क्या है कि जो पहले जो सिलेबस में वो सब चीज था नीचे में, तो वो सब चीज अभी अब नहीं है सिलेबस में, ताई जो मैं डेजर्ट पढ़ा देता हूँ। So, what is an ecosystems? Ecosystems are dynamic interactions between plants, animals, and microorganisms and their environment working together as a function units. So, ecosystem you have abiotic non-living factors and living factors, and they are interacting with each other. इसे कहते हैं ecosystem. So एक pond में देखो, in a pond you will see the non-living components are the water, minerals, oxygen, dissolved oxygen. These are the non-living, sunlight. But say these are the non-living factors, and the living fishes, phytoplankton, zooplankton, algae, जो मिलता है. These are the living. So दोनों में there is an interaction between them. ये इसको खाता है, ये इसमें मर जाता है, फिर then this happens, all these things. This is an interaction. So desert plants and animals living in what strikes many humans as oppressive environments. Solar energy that green plants convert into food fuels life here. So जब भी कोई, when we talk about desert, we think that बहुत कठिन, डिफिकल्ट है, बहुत खराब है। हाँ, कोई जिंदा नहीं रह सकता है रेगिस्तान में, क्या कैसे, हाउ विल पीपल सर्वाइव, मरुभूमिতে থাকবে কিভাবে? हाँ, क्या है, लेकिन but lots of sunlight powers the life in desert. You need adapt. So characteristic of the desert is that soil that form in arid climates, they are predominantly mineral soil with low organic content. Soil में minerals, there is high quantity of minerals, फटा हुआ जमीन, हाँ, but organic component नहीं है, because life कम है। वो मरेगा तभी तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होगा, इट्स ओनली मिनरल्स। मोस्ट प्लांट्स आर ड्राउट सॉल्ट टॉलरेंट, मतलब कम पानी में कम जले बांचते पारे, लेस वाटर इट कैन सर्वाइव। रेन डज फॉल ऑकेशनली इन डेजर्ट्स एंड डेजर्ट स्टॉर्म्स आर ऑफन वायलेंट, कभी कभी होता है। ऑल्सो दे आर वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट। मैं दुबई गया हूँ, मैं आई हैव बीन टू दुबई, आई हैव बीन टू अमान। हाँ, मेरा द कॉन्सेप्शन ऑफ अ डेजर्ट विच आई हैड, दैट कि दिन में बहुत ड्राई होगा हीट, हाँ, रात को बहुत ठंडा होगा, कुछ नहीं है, एकदम कलकत्ता जैसा पच 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 करता है, पूरा ह्यूमिड है, पसीना पसीना हो जाता है अमन में, एकदम। सऊदी अरेबिया में सेम। आई हैड द इम्प्रेशन कि वहां पे यू हैव मतलब रात को ठंडा है, मॉर्निंग ड्राई है, ऐसे नहीं है, वेरी ह्यूमिड है शाम को,
यहाँ पे पड़ता है ऐसे ही, लेकिन जब एक्सपीरियंस जब उतरा था एकदम चिप 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 कर रहा था, वेरी स्ट्रेंज, मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा। और पानी बहुत रेस्ट्रिक्टेड यूज है उसमें। So desert plants, these are names of कुछ desert plants: Moja vaster, cactus, soap tree, yucca, brittle bush, jumping chole, palo verde, triangle leaf, बरसात, ocotillo। ये पिक्चर्स है डेजर्ट प्लांट्स के, कैक्टस, सोप ट्री, यूका। Animals: armadillo lizard, desert tortoise, water holding frog, camel, desert kangaroo rat, coyote, sonoral desert toad, bobcat। ये सब इन लोग का पिक्चर है। आर्माडिलो लिजर्ड, these are desert kangaroo rat, didelphis। We are not talking about desert adaptation, we are talking about desert ecosystem, क्या क्या रहता है। Desert adaptation, in another semester you have to see what are the adaptations these animals have. So what is the desert for food chain? ऊपर में the apex predators, you have the hawks and the fox predators। small predators जो इन लोग को खाता है, snakes and lizards, मतलब they are eaten by hawk and fox, they eat snakes, lizards, scorpions and tarantula, they are being eaten by them। and then primary small mammals, insects, lizards, इन लोग को ये खाता है। and they eat on these cactus and all these grubs, primary producers: cactus, thorn acacias, creosote bushes, sage bush। This is the desert food chain पढ़ना पड़ता है। Desert can be separated in cold, hot and dry, semi-arid, coastal। 4 names, you have to study 4 names। These deserts are characterized by cold winters with snowfall, the cold deserts। snowfall होता है, ठंडा, पानी नहीं है। hot and dry deserts, the seasons are generally warm throughout the year and very hot in the summer। winters usually bring little rainfall, थोड़ा सा winter में rainfall होता है। semi-arid desert, the summers are moderately long and dry, and like hot deserts the winters normally bring low concentrations of rainfall। ये है semi-arid। coastal deserts, पहाड़ में, लद्दाख में मिलता है। these deserts occur in moderately cool to warm areas such as nearctic and near tropical regions। north में, लद्दाख में भी मिलता है ये ऐसे desert, cool desert। so this is end of desert। आज इतना ही हो करने दे, नेक्स्ट डे वी विल टेक अनदर क्लास अगेन। জ্যোতি বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার। কোশ্চেনস আছে? না স্যার। কোশ্চেনস নেই, ঠিক আছে। ওকে দেন, বাই বাই। ওকে স্যার। अगेन सैटरडे। হ্যাঁ স্যার। ओके, ठीक है, स्टॉप रिकॉर्डिंग।